Hello friends. Now in this session we are going to solve some more numericals based on unit, dimension and measurement. So let's start. Now the first numerical is the magnitude of any physical quantity is what? So we have four options. First is what? Depends on method of measurement, does not depends on method of measurement, is more in SI system than in CGS system. And the next one is what? Directly proportional to the fundamental units of mass, length and time. So first option says that it depends on the method of measurement. So suppose you have two different methods to measure a mass of an object. Let's say mass of an object. So if you change the method, so definitely the mass of object should not change. Mass change नहीं होना चाहिए. So that first option is definitely wrong. तो first वाला अपना wrong हो जाएगा कि it depends upon the method of measurement. Next is what? Does not depend on the method of measurement. कि method पे depend नहीं होना चाहिए. So basically ऑब्जेक्ट का जितना मास है वो उतना ही होना चाहिए भाई, किसी भी मेथड से मेजर करो. सो डेफिनेटली ये वाला क्या हो जाना चाहिए, अपना करेक्ट हो जाना चाहिए. ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट. नेक्स्ट क्या है, सी. एक बार अपना बी करेक्ट मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन नहीं है. सो अगर यहाँ पे दिया होता मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन तो हम लोग को नीचे के ऑप्शन भी चेक कर लेने चाहिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम. Now see, simple sum है. Newton second is the unit of. Newton second is the unit of. So we have force and second is basically time. So force into time. So what is force into time? Basically this is nothing but impulse. Force into time is impulse. Now we can find out its dimension. See, dimension निकालना है. So this force is what? kg meter kg meter per second square. See, force is mass into acceleration. So force is what? Mass into acceleration. So mass is kilogram and acceleration is what? Meter per second square. And we have time. So time multiply mein hai. So simply time, that is second. So 1 second will get cancelled. You will get kg meter per second. So we have dimension of this Newton second. Now we will find out dimension of velocity. So velocity का dimension क्या हो गया? Velocity is what? Displacement upon time. So displacement is what? Meter and time is what? Second. So meter per second. So match हुआ क्या? नहीं हुआ ना. So simply this is a wrong option. Now angular momentum. See, angular momentum L is what? MVR, that is mass into velocity into distance, radius basically. So this is kg. Velocity is what? Meter per second and radius is what? Measured in meter. So this will be kg meter square per second. So this is again wrong option. Then momentum. Momentum formula is what? Mass into velocity. So mass is what? Kilogram and velocity is what? Meter per second. So we got kg meter per second. So this is same as this one, kg meter per second. So we can say that Newton second is also a unit of momentum. Similarly, you can find out the unit of energy. Energy is what? Simply force into displacement, and force we know that mass into acceleration. So kg meter per second square, and this is displacement. So measure in meters. So this will become kg meter square second square. So the correct answer is what? Your momentum, because इसकी dimension क्या हो जाएगी? Match हो जाएगी. Next, the unit of power is. So now we know that power is what? Work upon time. Work done in a particular time. Now work is measured in joule and time is measured in second. So joule per second is the unit of power, and another unit of power is what? Watt. So we can say that joule per second and watt is the unit of this power. So joule, only joule, ये correct है. Joule per second is also correct. And here we have both options, joule per second and watt both. And here only watt. So क्या होना चाहिए आंसर अपना? C वाला होना चाहिए, because यहाँ पे only joule option दिया है. Here we have only joule per second. See, this joule is wrong. Joule is not unit of power. Joule watt unit होती है. So joule per second is correct, but यहाँ पे लिखा है joule per second only. सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा भी अपने पास यूनिट है.
सो इस सी में ऑप्शन दिया जूल पर सेकेंड एंड वॉट बोथ. नाउ द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट इट वाज सिंपल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है इसमें से. तो सिंपली एनर्जी का हम लोग डायमेंशन निकाल लेंगे या फिर एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, वहां से समझ में आ जाएगा. सो एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो और वर्क ले लो, दोनों से सबसे सेम आ जाएगा अपने पास बिकॉज सब सेम है. सो वर्क ले लेते हैं हम लोग. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज व्हाट मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास इज मेजर इन किलोग्राम. In SI system this is meter per second square and this is again meter, so this will be kg meter square per second square. Now this is your watt second. Now watt second, watt is what, power into time. Power, this is your energy or we can say that work. ये energy भी है और ये work भी, work दोनों का dimension सेम मिलने वाला है. and this power into time is nothing but work. so ये जो वर्क हो गया और ये दोनों वर्क हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, जो वॉट सेकंड है इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की यूनिट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट दिस जूल. जूल तो डेफिनेटली है बिकॉज एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है. अब ये दो ऑप्शन चेक करना है हम लोग को, न्यूटन मीटर एंड दिस केजी इनटू मीटर पर सेकेंड. सो न्यूटन मीटर क्या है अपने पास, फोर्स. दिस इज न्यूटन, तो ऐसा यूनिट न्यूटन किसकी है, फोर्स की है. एंड मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है. सो दिस इज सेम एज दिस वर्क. तो मतलब क्या हो गया, न्यूटन मीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी. एंड द लास्ट वन इज व्हाट, केजी मीटर पर सेकेंड. सो केजी मीटर पर सेकेंड. सी केजी इज व्हाट, केजी सिंपली मास हो गया. मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. सो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है. सो वी कैन से दैट दिस इज द यूनिट ऑफ momentum, not the energy. So the answer क्या हो जाएगा अपना, that is B1 which is not the unit of energy, that is this one kg meter per second. And the last one is this one. See, इस टाइप के sums most of exams में आते हैं. क्या है, in S is equal to a plus bt plus ct square, where s is measured in meters, that is वो distance हो गया, and t is what in seconds. So s अपना क्या है, मीटर है और t सेकंड में है. फाइंड आउट द यूनिट ऑफ सी. सी की यूनिट हम लोग को कैलकुलेट करनी है, सी की यूनिट कैलकुलेट करनी है. सो इन फिजिक्स इन एनी इक्वेशन, सी द डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म मस्ट बी सेम. द डायमेंशन ऑफ every term must be same, that is s, dimension of s, dimension of a, dimension of at, dimension of, sorry this is bt, dimension of ct, सब के सब क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. सो जो डायमेंशन तुम्हारा s का होगा वही डायमेंशन तुम्हारा ct स्क्वायर का मिलना चाहिए. सो वी हैव फोर टर्म्स. सो वी कैन से दैट ct स्क्वायर is equal to s, that is displacement. Now c is equal to what, this is simply s by t square. Now s is what, s is meter, डिस्प्लेसमेंट है, मीटर हो जाएगा t, t is what, t is टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड और उसका स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज ms रेज़ टू -2. सी अपॉन में है सो +2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. सो दैट इज मीटर पर सेकंड. So in this session we solved 5 questions. First one was simple understanding based, second one was formula based, Newton second unit search करनी थी, then again power and then energy, and the last one was we can say that a simple numericals. Just we have to find out the dimension, वो particular चीज का dimension निकालना होता है. So that's it for this session. Next session में हम लोग कुछ next solve करेंगे. Thank you.